की बात की है अब, और साइकोलॉजिस्ट को लेके बहुत एक बड़ी एक फस बना पिछले दिनों में when you were on the morning show, and you very rightly said, and by the way I'm extremely proud of you for saying this, Thank you. because it's something that not many people would have been brave enough to say, but it's completely true कि जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप दवा के साथ दुआ, दोनों चीज़ें go hand in hand, and कोई भी एक चीज़ cannot work without the other. We believe, right? Yes. But you said that, you know, psychiatrists या psychologists कहते हैं कि जी नमाज पढ़ो, and that statement was taken completely out of context. It was taken completely out of context. Yes. These things happen in our media, especially with social media being so active, और हर एक comment हर popular बंदे का scrutinize होता है. It's under the microscope. Yeah. Does that ever like scare you? Of course. It does. Of course it does. Like जब हम सब बैठे हुए थे तो हम लोग 4 लोग थे एंड आवर होस्ट. तो जब किसी टॉपिक से बात हो रही होती है और आप रिलेट कर जाते हो ना, तो आप बहुत इमोशनली चार्ज हो जाते हो. एंड आई एम अ पर्सन, I run by my emotions, you know. I'm very, if I get excited, you'll see me talking with my hands, and if I'm sad, you'll see me slouching. Like, I am a person like that. I do let my emotions take control of me, which I feel like can be a bad thing. तो वो जो टॉपिक चल रहा था हमारा, उससे I could relate to it. I do feel like कि मेरी wording बेहतर हो सकती थी. Okay. I will always take responsibility and accountability for something that I have done wrong. मुझे ऐसा लगता है कि wording मेरी बेहतर हो सकती थी. मेरा जो कहना था ना, वो ये था कि थेरेपिस्ट, थेरेपी, इन सारी चीज़ों को अभी भी एक टैबू टॉपिक समझा जाता है. टू आस्क फॉर हेल्प इज अ वेरी करेजियस थिंग. इट टेक्स अ लॉट फॉर अ पर्सन टू से दैट आई एम नॉट ओके एंड आई नीड हेल्प. एंड पीपल विल स्टिल व्यू यू एज क्रेजी, एज लाइक अरे ये तो पागल है. टू हैव दैट करेज, टू बी दैट स्ट्रॉन्ग, टू आस्क फॉर हेल्प, एंड देन जब आप किसी के पास जाओ और वो आपको ये बोले कि तुम्हारा ये गलत है, तुम्हारा ईमान गलत है, तो इट्स वेरी लाइक यू फील सो इन्फ्यूरियर कि मेरा खुदा भी मुझसे प्यार नहीं करता. यू नो, मेरा खुदा भी, हालांकि अल्लाह आपसे हमेशा प्यार करता है. आप जो कर रहे हो, पूरी दुनिया अगर आपके साथ नहीं, और अगर एक अल्लाह आपके साथ है ना, तो इट डजंट मैटर दैट द होल वर्ल्ड इजंट विद यू. एंड हमारा दीन इतना खूबसूरत है. व्हाट आई मेंट टू से वाज दैट साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, ये सारे लोग, इट्स नॉट देयर बिजनेस. अगर ये आपने कभी सुना है तो आपका खुदा आपसे प्यार करता है. यू आर डूइंग इनफ. फील इट. यू आर डूइंग इनफ. एंड पीपल basically proved my point कि अभी भी depression, any mental illness, not just depression, any mental illness is still not viewed as an illness. It's still viewed, oh, you can control it by your mind. No, you cannot. It's not something that can be controlled. Because who wants to, you know, not get up in the morning? Who wants to waste their life away rotting in bed? Nobody wants to do that. It's something that's not in one's control. And when you go to a therapist and they say that to you, it's so humiliating to you. It's so humiliating to hear. As a Muslim, it's so humiliating to hear. That's what I meant to say, is that if you've ever heard that, so it's not your fault. You are doing enough. Of course you can do more, but Allah still loves you. And it's none of their business. Your religious matter is none of anyone's business. It's between you and Allah. Of course, do your best to better it. Do your best, but it is between you and him. That's it. So what was your reaction when this blew up? Or did you realize on set when you said it कि ये problem ना बने? मैंने नाउज़ुबिल्लाह, मैंने हमारे दीन को गलत थोड़ी ना बोला था. Of course. मैंने तो बस ये बोला था कि दुआ के साथ दवा भी ज़रूरी है. खुदा ना खास्ता अगर किसी को बहुत बड़ी इलनेस होती है, फॉर एग्जांपल कैंसर, तो आप सिर्फ नमाजें नहीं पढ़ोगे, आप ऑब्वियसली ट्रीटमेंट भी लोगे. वो दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. दुआ के साथ दवा, दवा के साथ दुआ, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. साइड बाय साइड लेके चलना है आपको. आप एक को नहीं छोड़ सकते, और आप एक चीज पे बिल्कुल रिलाई नहीं कर सकते, चाहे वो दवा हो या चाहे वो दुआ हो. आप दोनों को साथ लेके चलोगे तो इंशाल्लाह यू विल आल्सो हैव मेंटल पीस एंड यू विल गेट बेटर क्विकली. You know, depression and anxiety and ADHD and stuff like that, it takes a toll on you physically as well. It takes a toll on you physically. You feel lethargic, you're shaky all the time, you're unable to focus, you cannot do your daily tasks. It's a proper tangible issue. It's a topic I'm very passionate about, and I will forever, till my last breath, I will stand for this topic. I will always talk about it. I will always encourage people to get help, because it's not easy, and it's not easy to face yourself and say that I'm not okay.
You know, I think I will always I will stand for this topic. And regarding your question, obviously I've been in the spotlight since I was a really, really young girl. I Yeah. still am young, but you know, since I was an actual child, now Yeah. I'm a teenager. Yeah. It's kind of very, like, sometimes it's a little hurtful when people say some stuff to you. It was very hurtful in the beginning. Shuru mein to I used to like cry. You know, like, oh my God, isn't मेरे बारे में ये कह दिया? But now it's like nobody really knows me, and nobody has walked a mile in my shoes. So it's unfair to me if I let it get to me. And you don't. I try my best not to. Right. I'm not always successful at it. कभी कभी कुछ लोग ऐसी चीज़ें कह देते हैं कि मैं सोचती रह जाती हूँ कि आपने कैसे कह दिया ये आप किसी को कैसे कह सकते हैं, कितनी गलत बात है. और आप कैसे, मतलब आप how can you be so sure about somebody when you haven't even met them? Yeah. You know, आप even if you have met somebody, even if you know somebody, आप किसी के ऊपर उंगली थोड़ी ना उठा सकते हैं. We're all human beings. You know, we're all human beings at the end of the day. I bleed just like the way you bleed. You know, if somebody scratches at my skin, it'll hurt me just like it'll hurt you. Nobody is superior than one another. So how do you handle the hurt? Because where you are today, successful in the limelight, but then there's pressure from studies and there's pressure from being on set and the performance, and then social media, and you're visible and you're under a microscope and you're being scrutinized and you're being trolled as well. इस सब का जो प्रेशर होता है, what is your mechanism to deal with it as a 16-year-old? I mean, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि एक 16 साल का बच्चा ये सब कुछ प्रेशर कैसे लेगा. Of course, I'm sure that parents are a huge support. My parents are a very big support. एक बैकबोन आपका होता है कि जी पेरेंट्स का अगर साथ है तो बहुत सी चीज़ें आपकी हो जाती हैं. Perhaps a good friend circle, Yes. plus perhaps therapy. But what all are your coping mechanisms? I think जब कोई real life में अगर आपके साथ थोड़ा सा rude होता है तो it's easier for me to actually handle that. Because आप वो सामने है ना आपके, तो you can kind of be like, no, don't say that, that's wrong. And you can, not that you have to justify yourself, but you can say that आप जो ये कह रहे हैं it's hurting me, please don't say that. आप रियल लाइफ में ये कर सकते हैं. सोशल मीडिया पे आप क्या ही कर सकते हैं. आप मतलब आप बिल्कुल हेल्पलेस होते हैं. आई डोंट थिंक एनीबडी विल एवर अंडरस्टैंड हाउ मच वर्ड्स कैन इम्पैक्ट समबडी. और आपको कभी नहीं पता कि व्हाट समबडी इज गोइंग थ्रू. जस्ट ट्राई योर बेस्ट टू बी नाइस. आई डोंट थिंक इट्स दैट डिफिकल्ट. अगर कोई सोशल मीडिया पे आ रहा है जो आपको नहीं पसंद तो आप स्क्रॉल कर दें. आपको ज़रूरी है कि आप किसी के बारे में इतनी बुरी बातें कहें. मतलब आप नहीं कहें, आप बस वो कर, आप अपने दिमाग में रखें और आप बस वो कर दें. But I've noticed you've not blocked or deleted any comments on your Instagram pictures or anything. Yeah, sometimes I do. Sometimes you do. Yeah, sometimes I do. जब कुछ बहुत बुरा होता है तो मैं कर देती हूँ. क्योंकि मैं कहती हूँ कि एना आसिफ पे आप आके कमेंट कर रहे हैं, एना आसिफ के पास कंट्रोल है तो मैं डिलीट कर दूंगी. मैं डिलीट कर दूंगी. Delete and block. I will not have any negativity in my very good in my own account. How dare you have the audacity? किसी दूसरी सोशल मीडिया पोस्ट पे करें उसका तो I have no control. मेरी पोस्ट पे आके आप करें, I will delete your comment. But sometimes I don't. Sometimes I'm like, let it stay there. It's okay. They said it. It's fine. But don't be an ugly person. Don't be an ugly person. Try not to. If you don't have